Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel Khandwal Physics. आज आम डिस्कसन करिबा very interesting portion of refraction. So ये होची मोर रिफ्रैक्शन रो सेकंड वीडियो. ओके आसा आरंभ करिबा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऊपर आज आम डिस्कसन करिबा. So laws of refraction ऊपर आज हमें डिस्कशन करबा को जाउछे. So please listen carefully. So suppose this is my interface which separates two media. So ये suppose मोर medium number 1, this is medium number 1 and this is medium number 2 and this is my interface, or you can say it is refracting surface. आको हम refracting surface कहि परिबा, आको हम interface बोली कहि परिबा, or the surface that separates two media or refracting surface जहाँ भी कहि परिबो. एटा गोटे लाइन नो, it is a surface. So this is say normal to the refracting surface. This is the normal. Let it be N O N prime. This is the normal to the refracting surface. Okay, and there is a source over here. What is source? एठू source रो light आसिकी interface रे ए point रे आसिकी हमरो incident हैला. तो ए रे को हमें कहिबा incident ray. This is my incident ray. तो you see this is XY. तो XY होची मोरो refracting surface. Or you can say boundary. SO is your incident ray. And after refraction, we know प्रथम वीडियो रे हम डिस्कशन करिथिले, when light travels from one medium to another medium, there will be change in direction of the ray. There will be a deviation if there is oblique incidence. যদি রেটা আমার obliquely incidence হবো তাহলে ray will be deviated either towards the normal or away from the normal. तो मु गोटे तुमको केस देखौची जोटा कि मोर नॉर्मल आरो को डेविएट हिच. एक्चुअली जदी ए मीडियम चेंज हेई न थांता ताहले ए रेटा एमती सीधा जाई थांता. We know when light travels in a homogeneous and isotropic medium, it travels in straight line with constant velocity. Okay, एपटे ये जाई थांता जदी मीडियम चेंज हेई न थांता. किंतु कोन हला मीडियम जेहेतु चेंज हला, गोटे मीडियम रो आलोक आ गोटे मीडियम को जेहेतु आसिला, there will be refraction, there will be change in velocity, there will be change in wavelength. किंतु frequency, color और phase ए तीनटा चेंज होबनी. ओके, प्रीवियस वीडियो रे आ ऊपर हम डिस्कशन करिचे. प्लीज गो थ्रू माय फर्स्ट वीडियो. तो रिफ्रैक्शन हैला परे this will be the deviation. एतिके डेविएट हे कि आपको डेल्टा बोली हम ना दे परिबा. This is the deviation, okay, produced due to refraction at the boundary xy. तो आपको जदि हमें ना देबा OI, then OI will be our refracted ray. Refracted ray बोली कहिबा. Okay, and you see N prime is my normal. So this is my normal at the point of incidence O to the refracting surface. तो एतिकी आइडिया को नहीं कि एठी गोटे आउट जिंस देखिबा हमें ए जो एंगल सृष्टि होची नॉर्मल सहित इंसिडेंट रे जतिकी एंगल सृष्टि करे ताको कहा जाय एंगल ऑफ इंसिडेंस. So this is your measure angle SON. You see SON ए जो एंगल आपको हमें कहूचे एंगल ऑफ इंसिडेंस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I. So this is my angle of incidence. And ION prime
is represented by R. This angle. Normal सहित refracted रे जतिके angle सृष्टि करे, normal सहित refracted रे जतिके angle सृष्टि करे ताको हमें R द्वारा represent करूचे, and this is your angle of refraction. Angle of refraction. Okay, so these are the nomenclatures we should know. तापरे जब हमें laws of refraction को, तो first law हमको कौन कहूची देखिबा? First law on refraction. So first law of refraction says, so it states that it will start hela quotation to start kariba. So it states that first law of refraction states that the incident ray, the refracted ray, and the normal co-normal at the point of incidence to the refracting surface okay, all lie in one plane. So this is the first law. तो first law कैसे बुझिबा? First law is very simple law. First law बहुत simple law. देखो ये law हमको कहूची जेतेबे भी रिफ्रैक्शन हुए, जोठी भी रिफ्रैक्शन हुए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in one plane. देखो this board is a plane. The board itself is a plane. अब तीन रे देखो रे को देखो फर्स्ट रे, सेकंड रे एंड नॉर्मल. सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. ये सब गुडा के देखो ए प्लेन ऊपर अछि. डेफिनेटली जोटी रिफ्रैक्शन हबो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल. तीनटा देखो गुटिए प्लेन रे रहिबे. ओके? सो दिस इज अ वेरी सिंपल लॉ. Now we will switch to second law. Second law of refraction. So its statement is like this. So it states that it quotation start kariba, the sign of angle of incidence bears a constant ratio with the sign of angle of refraction. Okay. So this is the law. या ऊपर हमें क्विकली आलोचना करिबा, वेरी पूरा कांसेप्ट को बुझिबा कोन ए लॉ हमको कहूची. टिके मो इंक पकाई दे. ओके, ओके. सेकंड लॉ को देखिबा. सेकंड लॉ हमको कहूची, इट स्टेट्स दैट the sign of angle of incidence bears a constant ratio with the sign of angle of refraction. So mathematically this can be written like this, that is sign of angle of incidence bears a constant ratio with the sign of angle of refraction. That means the ratio of sin I by sin R for a combination of two media will be equal to a constant quantity. It is a constant quantity. It is a constant quantity. ठीक है, भलरे बुझिबा. देखो, suppose I will consider a surface interface. Suppose this is medium 1 and this is medium 2 with absolute refractive index mu1 and absolute refractive index mu2 respectively.
एक नंबर मीडियम रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची mu1 एंड दुई नंबर रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची mu2 ओके ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर मु डिटेल डिस्कशन करिछि मोर फर्स्ट वीडियो रे प्लीज ताकू देखो सपोज आमे इटे देखो इटी गोटे नॉर्मल नेली इटी गोटे नॉर्मल नेली इटी गोटे नॉर्मल नेली जेतरा भी तमे नै परिबो सपोज इटी मु I1 एंगल रे गोटे रे इंसिडेंट करैली एठी सपोज I2 एंगल रे मु इंसिडेंट करैली एठी सपोज I3 एंगल रे मु इंसिडेंट करैली ओके एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस एठी करेस्पोंडिंगली तमरो R1 एठी भी रिफ्रैक्शन हला परे सपोज तमरो एटा हिजबो सपोज R2 एटी रिफ्रैक्शन हला परे सपोज एटा हिजबो R3 देखा जाई छै एक्सपेरिमेंटली जे sin I1 देखो sin I1 डिवाइडेड बाय sin corresponding angle of refraction sin R1 will be equal to sin R2 sorry sin I2 divided by sin R2 will be equal to sin I3 divided by sin R3 तमे जेतेटा भी नौचनियो तमे जेतेटा भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तमे जेतेटा भी एक्सपेरिमेंट एमती परफॉर्म करो I4 R4 I5 R5 जेतेटा भी तमे करिबो एक्सपेरिमेंट करिबो you will get the same result sin I1 divided by sin R1 रो रेशियो sin I2 divided by sin R2 ratio, sin I3 divided by sin R3 ratio, sin I4 divided by sin R4 ratio. ये सब गुड़ा का देखिबो constant आसीबो. It's a constant quantity, and that constant quantity is nothing but the refractive index of the second medium with respect to first. That means it is the relative, this constant is nothing but the relative refractive index of that medium to which light goes after refraction with respect to the medium from which light is incident on or comes from. Clear all of you? It is the second medium तमने जोटी हमरा refracted ray अछि एटा होची first medium जोटी हमरा incident ray अछि. So this is the refractive index of the second medium. This is the relative refractive index of the second medium with respect to first. ताको एमती हमें लिखा जाए या ऊपर हमें फर्स्ट वीडियो रे बहुत कथा डिस्कशन करी छे प्लीज गो थ्रू. फॉर्चुनेटली गोटे बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस देखो कौन कोइंसिडेंस वेरी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस जे हमें गत क्लास रे प्रीवियस वीडियो रे डिस्कशन करिचे ए जो mu21 is nothing but your mu2 divided by mu1 it already discussion हेछि हमरो प्लीज गो थ्रू ओके देखो तापरे mu2 by mu1 आगो को हमें और आउरी देखिचे जे mu2 by mu1 and this is again your v1 divided by v2. This is the ratio of mu21 or relative refractive index of second medium with respect to first is equal to the ratio of absolute refractive index in the second medium to the absolute refractive index of the first medium, which is equal to ratio of velocity of light in the first medium. It is velocity of light in the first medium v1, it is velocity of light in the second medium. तारो ratio भी या सहित समान होबो. And this is equal to lambda 1 divided by lambda 2. This is the ratio of wavelength of light in the first medium to the wavelength of light in the second medium. And ago ko ame auri dekhiba gote katha, this will be equal to the real depth divided by apparent depth. जोटा कि हमें नेक्स्ट वीडियो रे या ऊपर हमें डिटेल डिस्कशन करिबा रियल डेप्थ आउ एपारेंट डेप्थ ऊपर किंतु फॉर द टाइम बिंग खाली मने रखितो रियल डेप्थ बाय एपारेंट डेप्थ रो रेशियो ता मध्य तमरो ए sin i बाय sin r रो रेशियो सहित एक्जेक्टली समान हबो. इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिलेशन. देखो आपको बेस करी कि हमें बहुत प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करि परिबा. सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉ एंड दिस लॉ
or second law is called Snell's law. Snell's law. Okay, so very important. तो आमे आदिठू रिफ्रैक्शन रो सेकंड लॉ न कहिकी आमे स्नेल्स लॉ कहिबा इन द नेम ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट स्नेल. सो स्नेल्स लॉ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. स्नेल्स लॉ बुझा पड़िला. तो sin i by sin r, the ratio of a sin of angle of incidence bears a constant ratio with the sin of angle of refraction, which is a constant quantity, and that constant quantity is nothing but the relative refractive index of the second medium with respect to first medium, which is the ratio of absolute refractive index of second medium to the absolute refractive index of the first medium, and equal to v1 divided by v2. This is your velocity in the first medium. This is the velocity of light in the second medium. This is the wavelength of light in the first medium. This is the wavelength of the light in the second medium of the refraction, and which will be equal to your real depth and apparent depth. या कथा हमें परे डिस्कशन करिबा नेक्स्ट वीडियो रे. So this is all about. Let me write down this equation, very important equation what we have got. So sin I divided by sin r is equal to mu 2 1 is equal to mu 2 by mu 1 is equal to v1 divided by v2 is equal to lambda 1 divided by lambda 2. So it आमे यूज करिबा. So let me erase this one. ए स्नेल्स लॉ ऊपर ए सेकंड लॉ ऊपर आमे आसो किछि पॉइंट्स डिस्कशन करिबा. Okay. Now note number 1. एक नंबर पॉइंट रे for normal incidence what will happen, we know for normal incidence I will be equal to 0. See, I will be equal to 0. So this is my interface xy refracting surface, and this is my normal. Suppose n prime. This is my interface. This is my interface, and this is my normal. Suppose गोटे रे normal देकी ही आसिला. देखो normal देकी ही जदि गोटे रे आसीबो आपको कहा जाए normal incidence. आपको normal incidence बोली कहबा. So for normal incidence देखो ये होची हमर incident रे एटा ही हमर normal. तो angle of incidence will be equal to 0. जदि हमें Snell's law को यूज करिबा ताहले हमें कहबा sin I divided by sin R will be equal to refractive index of the second medium with respect to first. So this is my second medium, this is my first medium. Okay, so normal ही की जदि रे आसीबो ताले I is equal to 0 हबो. ताले हम जदि एटी सब्स्टिट्यूट करिबा तो ताले हम कोन को पाइबा देखिलो sin 0 is equal to sin mu 2 1 sin r. एमते लिखि परिबा कि नहीं? एमते लिखि परिबा कि नहीं? ताले this implies you see a mu 1 2 0 by something is equal to 0. तो is equal to sin r. तो sin r becomes 0. ताले this implies r will be also equal to 0. तो इथे हमें मने रखिबा जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुए माने एंगल ऑफ इंसिडेंस जदि 0 हुए माने हमर जदि I will be equal to 0 then the angle of refraction will also be equal to 0. ता माने रे नॉर्मल देकी ही जीवो रिफ्रैक्टेड रे ता देखो नॉर्मल देकी ही जीवो. there will be no deviation. So this is the condition of deviation. को सिचुएशन रे हमर रे डेविएट करबनी किंतु रिफ्रैक्शन हबो. प्लीज केयरफुल. रिफ्रैक्शन एटे होची कि नहीं तुम कहबो सर लाइट रो तो रे बेंडिंग हेनी ताले रिफ्रैक्शन बोध हुए होनी. नो, रिफ्रैक्शन होची. देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी, देयर विल बी चेंज इन वेवलेंथ,
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ରୁ ଆଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ କୁ ଗତି କରିବ there will be change in velocity, there will be change in wavelength of the light. तो एठी डेविएशन ऑल्दो होनी स्नेल्स लॉ को मानुची ता सहित वेलोसिटी चेंज होची हमर वेवलेंथ भी चेंज होची तेनु रिफ्रैक्शन होची रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस बट I will be equal to 0 then corresponding R will be equal to 0 there will be no deviation. This is the first situation. Clear to all of you? So a condition रे तमरा deviation हबनी. So एक नंबर पॉइंट रे हम जानिबा को पाइले if I will be equal to 0 then R will be equal to 0. So एक नंबर पॉइंट रे हमें लिखि की रखिबा if I is equal to 0 if I is equal to 0 then R will be equal to 0. Okay, so number 2 note को जीवा नंबर 2 रे आउ को कंडीशन रे डेविएशन न हेबार चांसेस अछि कि यस आउ गोटे कंडीशन रे मध्ये हमरो डेविएशन हबनी आउ गोटे कंडीशन रे भी हमरो डेविएशन हबनी जदी absolute refractive index of the medium 1 is mu1 and after absolute refractive index of the second medium suppose होछि mu2 ताहले जदी if mu1 will be equal to mu2 mu1 will be equal to mu2 then you see sin I mean देखो sin I divided by sin R will be equal to mu21 will be equal to mu2 by mu1 this will be equal as mu1 equal to mu2 जदि दुईटा जाक मीडियम रो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान हेई थाए ताले mu2 mu1 जदि सेम हे जबो द रेशियो विल बी 1 ताले दिस इंप्लाइज फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी कैन से sin I will be equal to sin R so this implies I will be equal to R so this is the second condition when there will be no deviation there will be no deviation ता माने जदि गोटे रे एमती आसीबो आसिके एठी जदि इंसिडेंट करिवो ताहले it will be traveling like this without any deviation पूरा straight पळि जिवो जोटा कि हमरो स्नेल्स लॉ रु भी प्रमाणित हो गला ओके सो दिस इज सेकंड कंडीशन ऑफ नो डेविएशन सो दुईटा सिचुएशन रे हमरो रिफ्रैक्शन रे डेविएशन हबनी प्रथम कंडीशन I is equal to जदि 0 हुए R will be equal to 0 that means there will be no deviation normal देई कि जदि रे आसीबा normal देई कि ही रिफ्रैक्ट हे के पळि जिवो सेकंड मीडियम रे सेकंड केस रे हमरा जदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम जदि समान हे जाए there will be also no deviation that means I will be equal to R eta hoji amara I this is I and this is R I will be equal to R there will be no deviation clear second point clear so dita point ko mane rakha e duita situation re amara deviation hobo nahi okay next point ko ame jiba to ethi ame note kari ki rakhiba if mu1 is equal to mu2 then again I will be equal to R no deviation so these two are situation of no deviation or condition of no deviation ए सिचुएशन दुईटा रे हमरो डेविएशन हबने त नंबर 3 पॉइंट को जिबा हमें सो नंबर 3 पॉइंट रे हमें देखिबा इफ लाइट passes from rarer to denser medium if light passes from rare to denser medium what happens देखिबा देखो कौन होची suppose this is my x this is my y this is n o n prime this is my normal okay this is my interface this is my normal suppose this is a rarer medium this is denser medium okay so rarer medium optically denser medium ऊपर हमें already discussion करिचे previous video रे please go through so देखो suppose गोटे लाइट आसी की rarer medium रो आसी की इंटरफेस रे हमरो ए पॉइंट रे इंसिडेंट कला ताले हमें जानि छे सपोज आकु ना रखिबा हमें म्यू आर
absolute refractive index of the rarer medium को mu r द्वारा रिप्रेजेंट करिबा and absolute refractive index of the denser medium को mu d बोली हमें नोट करिबा ताले टिके पुणी हमें जिबा sin i स्नेल्स लॉ यूज करिबा so sin i divided by sin r will be equal to, you see, it is mu 2 divided by mu 1. Okay, so this will be equal to mu 2. This is my second medium. This is my second medium. जोठी हमरा रिफ्रैक्टेड रे रहिबो ताको हमें सेकंड मीडियम कहिबा जोठी हमरा इंसिडेंट रे अछि ताको हमें फर्स्ट मीडियम कहिबा ताले हमें एठी लिखि परिबा mu 2 means this is mu d divided by mu 1 माने होचे हमरा mu r अब हमें भलरे जानिचे डेंसर मीडियम रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर मीडियम रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठु कोन हबो अधिका हबो दिस विल बी ग्रेटर देन 1 this will be greater than 1 because your mu d is greater than mu r. Okay, so it bhalare janiche the absolute refractive index of denser medium is greater than the absolute refractive index of optically rarer medium. Tahale so এটা হচ্ছে দেখো গোটে বড় সংখ্যা এটা হচ্ছে গোটে ছোট সংখ্যা so its ratio will be greater than 1 তাহলে sin i by sin r যদি greater than 1 হেলা তাহলে this implies sin i is greater than sin r. So this implies I will be greater than r. I will be greater than r. তাহলে angle of incidence টা angle of refraction ঠারু অধিকা হবো যদি অধিকা হবো you see ইয়ে হচ্ছে মোর angle of incidence I টা অধিকা হবো r টা ছোট হবো তাহলে ডেফিনেটলি কোন হেবাকু পড়িবো রে কু নরমাল আড়কু আসিবাকু পড়িবো देखो this is my angle of refraction r देखो angle of incidence to angle of refraction कोन हेला छोटो हे गला त माने रे टा कोआडे जाउथिला एपटे देखो जाउथिला तार एफ्टी की डेविएट कला माने नॉर्मल आड़ को आसी गला नॉर्मल आड़ को आसी गला दिस इज द डेविएशन so deviation delta will be equal to देखो तुम देखि परछो इटा this is पूराटा i पूराटा देखो इटा होची i ए पूराटा देखि परछो इटा होची पूराटा i तो i रो जदि हमें r को माइनस कर देबा तल we will get the angle of deviation delta is equal to i minus r देखो तो इटा होची i तार ऑपोजिट एंगल टा भी i होगा टोटलटा हमें जदि r को माइनस कर देबा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जदि माइनस कर देबा we will get the angle of deviation तो एति के डेविएट हे कि से नॉर्मल r को आसीबो ताले गोटे माइंड भीतर हमें पूरा बसई देबा जते बेले refraction takes or light travels from rarer medium to denser medium when light travels from rarer medium to denser medium the refracted ray comes towards the normal refracted ray is coming towards the normal r को आसिके डेविएट हे कि normal r को आसी जिवो okay that means I will be greater than r1 sorry I will be greater than r angle of incidence will be greater than angle of refraction clear to all of you a point को माने रखो very important point ताला रिवर्स केस को देखिबा ताले इटी केतरा पॉइंट हम आउडी टिके नोट करि के रखिबा देखो प्रथम कथा इटी तो हमें जानि परिले जे mu d that means mu 2 is greater than mu 1 or mu rarer तमने mu 2 is greater than mu 1 okay and you can say the refractive index relative refractive index of the second medium with respect to first ऊपर लिखि परिबो तुम तळे भी एठी भी लिखि परिबो is greater than 1 हबो कि नहीं the ratio mu 2 by mu 1 is greater than 1 हबो that means mu 2 is greater than mu 1 mu denser is greater than mu r आउ कोन हबो कहि परिबो मते देखो जते बेले रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम को जीवो the velocity will be decreasing तो v2 is less than v1 तो रेरर मीडियम रे हम प्रीवियस वीडियो रे पूरा डिस्कशन करिचे रेरर मीडियम रे हमरो लाइट रो बेग अधिका थाए डेंसर मीडियम रे लाइट रो बेग कमी जाए तो v2 is less than v1 and again lambda 2 is less than lambda 1 ए जिन सब हमें मन रखिबा ओके वेवलेंथ कमी जीवो वेलोसिटी कमी जीवो okay and we know the velocity of light in free space is maximum the rarest medium बोली तुम कहि परिबो जोटी कि हमर मीडियम ही नाही
जो मीडियम नहीं ताको हम कहूचे फ्री स्पेस और वैक्यूम बोली कहूचे सो लाइट रो बेग वैक्यूम रे मैक्सिमम it is approximately 3 into 10 power 8 meter per second, the fastest velocity which can be achievable by light. Okay, तो तापर तो गोटे मीडियम भीतर से पसिबो तार वेलोसिटी कोन हो जाए कमी जाए तो गोटे मीडियम रे तो आ गोटे मीडियम को जीवो वेलोसिटी पूरी चेंज होबो वेवलेंथ भी चेंज होबो like this. Okay, so this is all about. Let me check whether the video is running or not. Okay, thank you. It's running. Now we will consider the next case. So number 4 case. So number 4 point hochi moro if light passes from or travels from, we consider the second case or the inverse case, so denser to rarer medium, denser to rarer medium, what happens देखो second case को देखो. Suppose this is my interface, this is my xy interface and this is my normal. Okay, n o n prime. Suppose light asiki o ray incident heichi, so this is my incident ray and this is the corresponding your angle of incidence. Suppose it was more denser medium जार की absolute refractive index होची मोरो mu d आउ इटा होची मोरो rarer medium. Okay, जार की absolute refractive index होची mu r. Okay, this is my first medium and this is my second medium. Again we will apply Snell's law. So applying Snell's law we can write sine of angle of incidence and sine of angle of refraction ratio, this will be equal to again mu 2 1 is equal to mu 2 by mu 1. Here mu 2 is nothing but your mu r divided by mu 1 is nothing but your mu d. And we know, you see, rarer medium ro refractive index, denser medium ro refractive index to choto heitiba jogu, this will be less than 1. This will be less than 1. Tale this implies sin I is less than sin r. So this implies I is less than r. ता माने एठी r बड़ हबो I अपेक्षा एंगल ऑफ इंसिडेंस अपेक्षा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमरो बड़ हबो. ता माने केमती बड़ हबो देखि परिबो कि so it should be deviated away from the normal. अब टिके ताको डिवाइड कर देबा जणा पड़िबो. Okay, you see it will be deviated like this. You see, so this is the deviation माने r बड़ हो जिवो. एक्चुअली से जाई थांता एपटे जाई थांता जदि मीडियम सेम थांता ताले लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड अलोंग दिस पाथ विदाउट एनी डेविएशन. किंतु जते रिफ्रैक्शन हे जाए डेविएट तो हेबा को पड़िबो. ओब्लिक इंसिडेंस हेछि, नॉर्मल इंसिडेंस हेतिले डेविएशन हुएनी किंतु ओब्लिक इंसिडेंस हला माने डेविएशन हबो. तो एई केस रे जदि लाइट रेरर मीडियम रो डेंसर मीडियम आड़ को जाउथिबो ताले हमर नॉर्मल आड़ को डेविएट हबो. किंतु जते रेरर मीडियम रो डेंसर मीडियम आड़ को जाउथिबो सॉरी डेंसर मीडियम रो जदि रेरर मीडियम आड़ को जाउथिबो ताले नॉर्मल टू दूर को डेविएट हेजिबो. नॉर्मल टू दूर को डेविएट हेजिबो. ता माने दिस इज माय डेविएशन डेल्टा. दिस इज डेल्टा एंड पूराटा हो हमर ए जो पूराटा को देखुछ दिस इज माय r. तो हियर यू कैन से डेल्टा इज इक्वल टू योर I or r minus I. So this is I देखो एटा होछ मोर I ही परिबो. This is I. So this is delta is equal to r minus I in this situation. आउ एठी और पॉइंट्स नोट करि के रखबा देखो. Here mu d is greater than mu r. हला एटा होछ एक नंबर मीडियम. त माने mu 1 is greater than mu 2. लाइट डेंसर रो रेरर को जाउची ताले एठी के जतबे सेकंड मीडियम को आसीबो
V1 V2 V1 V2 देखो लाइट डेंसर रो रेरर को आसिला जते बेले रेरर आरो को जीवो वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग वेलोसिटी बढ़िबो किंतु एटी वेलोसिटी कोइ थिला कमी थिला एटी वेलोसिटी कमी थिला ओके सेका सेकंड मीडियम रो वेलोसिटी कम थिला एटी किंतु सेकंड मीडियम रो वेलोसिटी कोन हिजबो बढ़ी जिवो ओके सो V1 इज ग्रेटर सॉरी भूल हे गेला एटी सेकंड मीडियम रेरर अछि सेकंड मीडियम रेरर अछि हमरा सेकंड मीडियम रे कोन हबो वेलोसिटी बढ़िबो सेकंड मीडियम रे वेलोसिटी बढ़िबो दिस इज द केस प्लीज सॉरी सो वेलोसिटी हमरा बढ़िबो सेकंड मीडियम रे काहे ना एटा होछ हमरा रेरर मीडियम सेमती लैम्बडा 1 मध्ये कोन हबो लैम्बडा 1 इज आल्सो लेस देन लैम्बडा 2 वेवलेंथ रेरर मीडियम रो डेंसर मीडियम को आसीले हमरा कोन हबो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कम हेची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो डेंसर थिला रेरर को आसीला कम हैला देखो μ1 टा अधिक μ1 टा कोन थिला μ1 टा अधिक थिला कम हैला वेलोसिटी कोन हिजबो बढ़िबो वेवलेंथ बढ़िबो ओके सो दीज आर दी सिचुएशंस यदि इटा सिचुएशन को भलरे स्टडी करो हमको सब बेले दरकार पड़िबो ताहले पूरा कंक्लूजन रे हम आसी पहुंचले जदि लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम द रिफ्रैक्टेड रे कम क्लोजर टू द नॉर्मल आड़ को डेविएट हबो जदि डेंसर मीडियम रो रेरर मीडियम आड़ को जाए लाइट डिफ्रैक्शन परे ताहले सिए नॉर्मल टू दूरेई जिवो it will be deviated away from the normal clear to all of you so these are some important points okay 4 number point सरला हमरा next 5 number point को जिबा so Snell's law होची गोटे बहुत very important law देखो ताकू नहीं कि हमें कितने जिनिस हमें जानिबा को पाउचे जते बेले मु एटा इरेज करूची सेते बेले टिके फॉरवर्ड कर दियो वीडियो को जदि बुझा पड़ जाउची ताले स्पीड करके देखो वीडियो को टिके 1.5 स्पीड रे देखो यू विल सेव योर टाइम ओके नेक्स्ट पॉइंट जीवा हमें 5 नंबर पॉइंट को जीवा तो 5 नंबर पॉइंट रे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कौन देखिबा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमको देखो कौन कहूची प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अनुसार हम गोटे काम करबा देखो यू सी सपोज देयर इज ए surface of separation like this is normal to the interface this is my xy this is n o n prime clear okay तो देखो सपोज गोटे रे आसिला मने मने भाबीबा सपोज एटा होची हमर रेरर मीडियम सेकंड मीडियम होची सपोज हमर डेंसर मीडियम क्लियर ओके सो इंसिडेंट रे आसी कि एठी पडिला विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तो रेरर रो जदी डेंसर आड़ को जदी डेविएट माने रिफ्रैक्शन हबो ताले इट विल बी कमिंग क्लोजर टू दी नॉर्मल तो ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल सहित जति एंगल सृष्टि करे ताको कहा जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो दिस इज द सिचुएशन अच्छा ठीक है स्नेल्स लॉ को अप्लाई करिबा की तो sin i divided by sin r will be equal to refractive index of the absolute refractive index of the first medium suppose होची mu1 and absolute refractive index of the second medium होची suppose mu2 then this is your mu2 1 you can write like this is equal to mu2 divided by mu1 ओके देखो स्नेल्स लॉ को यूज करिबार गोटे बहुत बढ़िया तरीका देखो यू सी वी नो देखो टिके गोटे सिंपलेस्ट वे sin i डिवाइड बाय sin r इज इक्वल टू mu2 by mu1 ये तो हमरो लॉ ना आपको कौन केमदी मन रखिबा देखो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देबा mu1 sin i
will be equal to mu 2 sin r. तो आपको हमें मन रखिबा एमती मन रखिबा तमाने देखो जो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल ऑफ दैट मीडियम सेकंड को देखो mu 2 सेकंड मीडियम रो होची देखो mu 2 और सेकंड मीडियम रो हमर अछि r तो एमती जदि मन रखिबा हमर भूल हेबार चांसेस नाही ओके सो mu 8 रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुणन sin ऑफ 8 रो एंगल is equal to 8 रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुणन sin ऑफ 8 रो एंगल भूल हेबार बिल्कुल और चांस नहीं कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं तो आपको हमें व्यवहार करबा सब बेले टू अवॉइड द मिस्टेक तो sin i by sin r will be equal to mu 2 by mu 1 let it be my equation number 1 ओके हमें गोटे काम करबा गोटे प्लेन मिरर को नहीं आनिबा एंड रिफ्रैक्टेड रे को परपेंडिकुलर करके प्लेस करबा दिस इज ए प्लेन मिरर प्लेन मिरर को आनी की रिफ्रैक्टेड रे को परपेंडिकुलर करके जदी रखिबा this refracted ray becomes incident ray for the plane mirror तेना प्लेन मिरर ऊपर ए रेट आसी की जेहेतु पडुची तनो ए रिफ्रैक्टेड रे ता कहां पे रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्शन हैला सो रिफ्रैक्शन पई एटा हो रिफ्रैक्टेड रे किंतु एठी रिफ्लेक्शन हबो मिरर रे हमर कोन हुए रिफ्लेक्शन हुए तो रिफ्लेक्शन हेबा पई एटा हिजबो हमर इंसिडेंट रे एटा ही नॉर्मल तनो करी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू 0 तो लॉ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कोन कहू एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ताल जति की एंगल रे आसीथिला सेति की एंगल रे फेरी की जीवो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मध्ये कोन हबो 0 हबो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हबो तो एपटे पुनी रे फेरी की जाई की पुनी देखा बाउंड्री रे पड़िबो परे पुनी रिफ्लेक्शन हबो सॉरी रिफ्रैक्शन हबो पुनी रिफ्रैक्शन हबो जेतो मीडियम चेंज होउची मीडियम चेंज होला माने रिफ्रैक्शन हबो तो रिफ्रैक्शन एम्प्टी हबो जो रास्ता रे सी आसीथिला सेही रास्ता रे ही फेरी की जीवो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस इफ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट द रे माने retraces its path it will follow the paths adopted by previously हला प्रीवियसली जो रास्ता देकी से आसीथिबो सही रास्ता देकी ही से फेरी की जीवो देखो जो रास्ता देकी आसीथिला सही रास्ता देकी ही फेरी की जीवो ओके ताहले हमें जदी आउथरे एटा हला देखो रिफ्रैक्शन फ्रॉम 1 to 2 एटा देखो एटा मो जो स्नेल्स लॉ टा यूज करिथिली रिफ्रैक्शन कोटी केतिला 1 ରୁ 2 को हेतिला वर्तमान मु जदी आउथरे 2 to 1 को रिफ्रैक्शन पई यूज करिवि सो रिफ्रैक्शन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन फ्रॉम 2 to 1 आउथरे स्नेल्स लॉ यूज करिबा आसो देखो आकु एटा को यूज करिबा तो mu 2 sin r is equal to mu 1 sin i होबो कि नहीं ताहले दिस इंप्लाइज sin r इट एंगल ऑफ इंसिडेंस केते r एंगल ऑफ इंसिडेंस होची r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होची i प्लीज कीप इन माइंड तो sin i by sin r इटा देखो इटा होची एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होची एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जस्ट रिवर्स हो गला तो sin r by sin i will be equal to mu 1 divided by mu 2 which is nothing but the absolute refractive index of 1 with respect to 2 आको जदि हम इक्वेशन 2 देबा इक्वेशन 1 को 2 को जदि हम मल्टीप्लाई करबा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड रे मल्टीप्लाई करबा राइट साइड को राइट साइड रे जदि मल्टीप्लाई करबा यू सी व्हाट यू विल गेट ताहले हम लिखि परिबा mu 2 1 multiplied by mu 1 2 will be equal to sin I divided by sin r multiplied by sin r divided by sin I. So this sin I cancels out, sin r cancels out. ताले गोटे बहुत important conclusion रे हमें पहुंचिले mu 2 1 multiplied by mu 1 2 1 को मैं इट लिख परिबा ओके एठी हमें 1 को लिखिबा तो 2 1 will be equal to 1
will be equal to 1. Or you can say the relative refractive index of a second medium with respect to first will be equal to reciprocal of relative refractive index of the first medium with respect to 2. So principle of reversibility रू हमको गोटे important relation हमको मिला हमें एमती मन रखिबा relative refractive index of the second medium with respect to first will be equal to the reciprocal of relative refractive index of the first medium with respect to second. Okay, तो माने एग्जांपल गोटे नै परिबो तमे सपोज ग्लास रो हमें जानि जे absolute refractive index होची approximately 1.5 and the water refractive index होची 1.33. okay आप लिखि परिबा हमें 3/2. so this is your approximately this is 3/2 and this is 4/3 like this. okay मु तुमको जदी पचारिबी suppose what is the absolute refractive index of a glass with respect to water. What is the absolute refractive index of a glass with respect to water? This is the absolute refractive index of glass with respect to free space, which is called your absolute refractive index. This is the absolute refractive index of water, means it is the refractive index of water with respect to vacuum. Okay, তাহলে মু তোমাকে পচারি what is the absolute refractive index of glass with respect to water. This means it is the absolute refractive index of a glass divided by absolute refractive index of water raw ratio. Okay, so is equal to केते हिजबो इटा देखो हिजबो इटा 3/2 whole divided by 4/3. so this is nothing but your 9 divided by 8. this is 9 divided by 8. ता माने मु तुमको जदी पचारिबी what is the refractive index of water with respect to glass एटा जदी मु केते बोली तुमको पचारिबी बाहर करि परिबो नै. so this is equal to you see is equal to 1 divided by absolute refractive index of glass with respect to water. देखो 2 1 2 1 1 2. so water glass water एटा हमको जणा अछि एटा गिवन अछि 9/8. तो इट हम सब्स्टिट्यूट कर दबा तो 1 divided by 9/8 is equal to 8/9. this is the answer. so relative refractive index of water with respect to glass. जदि गोटे रेयर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करिबा with respect to a denser medium it is less than 1. जदि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम बाहर करिबा with respect to rarer medium it is greater than 1. clear? but absolute refractive index is always greater than 1. please keep in mind absolute refractive index is always greater than 1. this is greater than 1 this is greater than 1 because absolute refractive index raw minimum value 1 for free space or vacuum. clear? so this is the point number 5. point number 5. now we will switch to point number 6. point number 6 रे गोटे आ गोटे important conclusion रे हमें पहुंचीबा. okay suppose you see এটা হচ্ছে গোটে इंटरफेस. suppose এইটা भी गोटे इंटरफेस ये गोटे इंटरफेस ये गोटे इंटरफेस ये गोटे इंटरफेस केतेटा गोटे देखो suppose এইটা হচ্ছে मीडियम नंबर 1 this is medium number 2 this is medium number 3 this is medium number 4 and this is medium number 5. suppose पांचटा मीडियम এইটা गोटे मीडियम अछि এইটা आ गोटे किछि मीडियम এইটা आ गोटे किछि मीडियम এইটা अलगा मीडियम এইটা अलगा मीडियम. सो पांचटा मीडियम प्रथम आम कौन करवा ए सब जगह हूँ बाउंड्री आम रिफ्रैक्टिंग सरफेस. प्रथम मीडियम को द्वितीय मीडियम को जी सेपरेट करुचे दिस इज माय इंटरफेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस. एटा सरफेस एटा लाइन नहीं इट इज ए सरफेस. दिस इज आल्सो ए सरफेस दिस इज सरफेस दिस सरफेस. ओके सपोज एठी गोटे हमर नॉर्मल अछि प्रथम गोटे रे आसी की एठी पडिला सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे. तो नॉर्मल सहित इंसिडेंट रे जति एंगल सृष्टि करूची ताको सपोज हमें ना देबा I1 सपोज I1. तो ये रिफ्रैक्शन हला परे जदि एटा रेयर मीडियम थिबा एटा डेंसर मीडियम थिबो ताले ये नॉर्मल आडो को आसी जिवो एटा पुनी रिफ्रैक्शन हबो. देखो एटा पुनी रिफ्रैक्शन हबो मन कर एटा डेंसर थिबो एटा मन कर रेयर थिबो हम तो जानि ने
भाबिबा सपोज एटा डेंसर एटा मनकर रेयर थिबो तो नॉर्मल टू दूर जीवो लाइक दिस ओके कोन भी हबो सपोज एटा डेंसर एटा सॉरी सपोज एटा रेयर एटा मनकर ताठू डेंसर ताले एटा नॉर्मल आड़ को आसी जीवो लाइक दिस तो पुणी एठी पुणी आउथरे कोन हबो सपोज दिस इज द नॉर्मल एठी पुणी मनकर रेयर थिबो एटा मनकर डेंसर थिबो नहीं मनकर एटा डेंसर ताठू मनकर एटा रेयर ताले नॉर्मल टू दूर जीवो लाइक दिस सो अल्टीमेटली 1 2 3 4 चारि थर रिफ्रैक्शन हेबा परे दिस इज द एमर्जेंट रे दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द एमर्जेंट रे सो एमर्जेंट रे ता जति के एंगल सृष्टि करूची नॉर्मल सहित ताको मु ई बोली ना देबी व्हिच इज नथिंग बट योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर this surface number 1 surface number 2 surface number 3 surface number 4 जो माने चतुर्थ रिफ्रैक्शन जते बेले हला सेठी एटा हो तमरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जाको हम कहबा एंगल ऑफ इमर्जेंस लास्ट हमर क्लियर तो गुटे जिंस मने रखिबा तला हम लिखि परिबा एमती जदी हुए सो फाइनली यू कैन राइट लाइक दिस ए जो इंटरमीडिएटरी जो मीडियम को तमे इग्नोर करिके तमे अल्टीमेटली लिखि परिबो देखो एठर मनकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची mu1 एठर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होबस mu2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu4 दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu5 कल लास्ट को तमे लिखि परिबो तो मु कोन कहिथिल देखो स्नेल्स लॉ यूज करिबा तो mu1 फर्स्ट मीडियम रो साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम sin i1 will be equal to तुम जब एमती करी चलिबो अल्टीमेटली देखो ए जो इंटरमीडिएटरी जो रिफ्रैक्शन हबो सब जगह कैंसिल हो चलिबो सब कैंसिल हो चलिबो लास्ट को यू विल गेट जहां तुमको जो लास्ट को मिलिबो मो सेटा लिखुची एठी देखो mu5 sin of angle in that medium केते अछि e so this is the Snell's law आ तुम कहबे सर मझिरे ए जो रिफ्रैक्शन होला सब कैंसिल हो जिवो सब कटि जीवो एट जेंति कटिला हमरो sin i by sin r को देखो r को केंति कटि गेला सब एटा कैंसिल हो जिवो सब जाक जदी कंडीशन ए सब जाक इंटरफेस कोन आइतिबा दरकार पैरेलल होइतिबा दरकार नहले हबनी बिल्कुल हबनी प्लीज कीप इन माइंड द इंटरफेसेस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर ताहले एठी गोटे पुणी जिंस मन रख इफ जदी फर्स्ट मीडियम रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लास्ट जो रिफ्रैक्शन हला पर जो मीडियम को लाइट बाहरिला देखो इट लाइट एंटर कला बोली भाबिबा इट लाइट एग्जिट कला बोली भाबिला हला लाइट एंटर्स इट एग्जिट्स ओके तो इट प्रथम रिफ्रैक्शन हला इट लास्ट रिफ्रैक्शन जदी mu1 = mu5 हे जाए माने 8 रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां थिला देखो mu1 और 8 रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो सपोज mu5 ए दीटा जदी समान हे जाए ताले you will see that mu1 और mu5 जदी समान हे जिवो ताहले हम लिखि परिबा sin i1 will be equal to sin e काइना mu1 mu5 समान हे गला कैंसिल कर देली so sin i1 is equal to sin e this implies i1 will be equal to e very important conclusion i1 will be equal to e okay तको i1 कहीं ना देबा simply i will ना दे देबा no problem at all i will ना दे देबा so angle of incidence and angle of emergence will be equal ता माने जदी ए एंगल और ए एंगल जदी समान हे जिवो केतबे जदी mu1 will be equal to mu5 से कंडीशन रे आपको जदी देखो हम फॉरवर्ड प्रोड्यूस करबे जो इंसिडेंट रे को जदी हम फॉरवर्ड प्रोड्यूस करबी यू सी फॉरवर्ड जदी प्रोड्यूस करबी योर इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे रो डायरेक्शन और इमर्जेंट रे रो डायरेक्शन देखो दे आर पैरेलल टू ईच अदर दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर देयर विल बी ओनली शिफ्ट गोटे शिफ्ट हिच देखो इंसिडेंट रे ए दिगरे जाउथिला वर्तमान इमर्जेंट रेटा ए दिगरे जाउची एति की शिफ्ट हिच आकु कहा जाए लेटरल शिफ्ट बोली कहा जाए लेटरल शिफ्ट या पाई हम एक्सप्रेशन आगो को तैयारी करिबा केति की शिफ्ट हबो ता पाई भी एक्सप्रेशन हम तैयारी करिबा किंतु हमर इंसिडेंट रे किछि हमर शिफ्ट हिची बट इंसिडेंट रे रो डायरेक्शन आ इमर्जेंट रे रो डायरेक्शन सेम रहिबो दैट मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर only there will be shift lateral shift which is called your lateral shift एति होची हमरा lateral shift इंसिडेंट रेटा ए दिगरे जाउथिला जस्ट एति के शिफ्ट हे कि लास्ट को ए दिगरे जाउची आफ्टर 4 रिफ्रैक्शंस
So I will be equal to E. Clear to all of you? Clear to all of you? Okay. So these are some points. तो बोध हुए वीडियो लंबा हो गलानी तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे ए स्नेल्स लॉ ऊपर अनेक प्रॉब्लम आमे सॉल्व करिबा आहुरी इंपोर्टेंट जिंस ऊपर डिस्कशन करिबा प्लीज गो थ्रू द वीडियो sequentially. Okay, thank you all, bye.